नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जिंदा, सोशल इम्पैक्ट असेसर and registered value institute in financials. So today we shall discuss the MCQs on SEBI Act 1990. This chapter is found in an ISM work booklet at in the chapter 11. So there are some acts mentioned there. One of that SEBI Act 1990. In the social impact assessor examination, 1 to 3 questions definitely came from the chapter 11. Easy subjects, so much is not asked from you. उसमें से थोड़ा ही पोर्शन इस एग्जाम के लिए पूछा जाता है, तो उसके ऊपर जो प्रोबेबल एमसीक्यूज बनते हैं, आई हैव ट्राइड फॉर द बेनिफिट ऑफ द aspirants of the social impact assessor examinations. So, what is the primary objective of SEBI Act 1990? क्या स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना है? इन्वेस्टर्स जो सिक्योरिटी मार्केट में डील करते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है? क्या ब्रोकर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करना है या मर्जर और एक्विजिशन को फैसिलिटेट करना है? सो इसमें से सेबी का काम जो है, जो इन्वेस्टर हैं उनको प्रोटेक्ट करना है ताकि उनको ब्रोकर, मार्केट, उतार चढ़ाव कुछ ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी इसमें दिया हुआ है बुक में कि सेबी एक्ट ऑफ 1990 was enacted to provide for the establishment of the board to protect the interest of the investors in securities. There are other definitions. It is a half definition I have taken here because that is relevant towards the MCQ. So you can go through the definition full in the SEBI Act 1992. Which of the following is not a function of SEBI under the SEBI Act of 1992? So, regulating depositories, regulating venture capital funds, regulating self-regulatory organizations, and promoting agriculture markets. So, इसमें तीनों regulating depositories, venture capital funds और regulatory self organizations को सेबी रेगुलेट करता है, बल्कि एग्रीकल्चर मार्केट को नहीं करता है। तो एक्सप्लेनेशन इज दैट registering and regulating the working of the depositories and its participants, registering and regulating the working of venture capital funds, promoting and regulating of self-regulatory organizations. So these 3 lines are taken from the SEBI Act 1990. Which category of intermediaries is not mentioned in the SEBI Act for regulations? So, stockbrokers, bankers to an issue, agriculture producers, and investment advisors. So, क्योंकि सेबी ज्यादातर फाइनेंस से ही डील करता है, एग्रीकल्चर से नहीं डील करता है, so it is a odd man out. So, answer is agriculture producers. So, explanation में these are given from the book that registering and regulating working of stockbrokers, registering and regulating of working of the bankers to an issue, registering and regulating the working of an investment advisors. So these 3 lines are clearly mentioned in the SEBI Act 1990. Now, under the SEBI Act, which does SEBI have the power to prohibit? तो क्या प्रोहिबिट करने की पावर है? क्या इनसाइडर ट्रेडिंग को, ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चर कमोडिटीज, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज को, या रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस? सो हियर अगेन इट्स ए वेरी इजी क्वेश्चन
एग्रीकल्चर में सेबी डील नहीं करता है। सो आंसर बी आ जाएगा। सॉरी, मैं नॉट के तरफ पे कह दिया, तो पावर टू प्रोहिबिट है, तो आंसर फर्स्ट आएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग इन दी सिक्योरिटीज को प्रोहिबिट करता है, बाकी को नहीं। सो एक्सप्लेनेशन में भी ये बुक से दिया हुआ है कि प्रोहिबिटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन दी सिक्योरिटी, प्रोहिबिटिंग fraudulent and unfair trade practices related to the securities markets. What kind of proceedings can SEBI initiate against intermediaries who default under the Act? क्या उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर सकता है, सिविल लॉ सूट कर सकता है, एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स कर सकता है, या मीडिएशन और आर्बिट्रेशन? सो आंसर इज एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स करता है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी बुक में दी है कि सेबी एक्ट एम्पावर्स सेबी to impose penalty and initiate adjudication proceedings against intermediaries who default on the grounds such as failure to furnish information, return, etc., or failure by a person to enter into agreement, the client, etc. Again, question है, what is the SEBI empowered to do under the SEBI Act with regards to substantial acquisition of shares and takeover of companies? So, क्या प्रमोट करता है मर्जर और एक्विजिशन, फोन एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, इन्वेस्टिगेट एंड रेगुलेट सच एक्टिविटी, और लाइसेंस देता है कंपनीज को? तो आंसर इज investigate and regulate such activities which pertains to substantial acquisition of shares and takeover of companies. So in explanation, it is given that regulating substantial acquisition of shares and takeover of companies को regulate. Another question is that what does SEBI do to promote investors education under the SEBI? क्या फ्री स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड करता है, वर्कशॉप और सेमिनार्स लेता है, गारंटीड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट? सो सेबी का काम फ्री ट्रेडिंग नहीं कराना है, गारंटीड रिटर्न भी नहीं करता है, रेगुलेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी नहीं करता है, बल्कि सेमिनार्स और वर्कशॉप्स कंडक्ट करता है in the favor of investors so that they may be aware of. So explanation भी किया हुआ है, promoting investors education and training for intermediaries of securities markets. Another question is that which act provisions may be delegated to SEBI by the central government under the SEBI Act, whether income tax, Companies Act, Securities Contract Regulation Act 1956, or Banking Regulation? So answer is Securities Regulation Act 1956. So explanation is that performing all such functions and exercising such powers under the provisions of the Securities Contract Regulation Act 1956 as may be delegated to SEBI by the central. So this is from my side. I hope these questions will be useful to the aspirants of the social impact assessor examinations. बहुत बहुत धन्यवाद।